Good evening to all of you, poets, translators, poetry lovers. On behalf of Kritya-Poetry East and West, I warmly welcome you to this second session of our ongoing poetry reading series. Of course, this is our third event. The other event that we have been having is Poetry Book Talk, and this is the second poetry session that we have today. Kritya-Poetry East and West is an initiative of Kritya, an international journal of poetry, that has for years been committed to building meaningful bridges across languages, cultures, and poetic traditions. In a time marked by fragmentation, violence, and uncertainty, this series seeks to create a shared space where poetry can speak across borders, bringing together voices that differ in language and location, yet resonate in their human concerns. We are deeply grateful to all of you, poets, listeners, lovers of poetry, translators, for being part of this growing conversation. I am very happy and very excited to welcome our distinguished poets for today's session. Philip Nikolayev, a Russian-American multilingual poet based in Boston. Ramesh Aroli, an acclaimed Kannada poet and academic based in Delhi. Sarfaraz Alam, a poet writing in Hindi and a professor of geography at Banaras Hindu University, Varanasi. We are honored to have such diverse and powerful poetic voices with us today. Of course, we have Rati, Saxena, the founder of Kritya-Poetry, and Brijesh Singh, a poet and a translator. I also extend a warm welcome to our audience joining us from across the world. Your presence completes this poetic gathering. I now invite poet, editor, and the guiding force behind Kritya, Rati Saxena, to offer the welcome remarks. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कृत्या करीब 20 साल से चल रही है और हमने कोरोना के टाइम से 2020 और 2021 में पोइट्री फेस्टिवल्स ऑनलाइन करना शुरू करा था, काफ़ी लंबे फेस्टिवल्स से, और कृत्या टॉक भी किया था। इसके बाद हमने ना तो ज़मीनी हकीकती फेस्टिवल किया और ना ही हमने कृत्या फेस्टिवल ऑनलाइन किया। लेकिन हम सोचते हैं कि अब फिर ऐसा समय आ गया है जब युद्ध है, समस्याएं हैं, तकलीफ है, और हमारे पास में कोई भी चारा नहीं है सिवाय इसके कि हमारे पास में शब्द हैं, और हम उन शब्दों से ही हम खेल सकते हैं। We can't do anything. We are just helpless. We find very helpless in this situation of war. When the students of children from the schools are dying from bomb, this is all ego of some few people, few heads of the countries. We have seen in past where all these heads who were just bringing the war in the world, but what happened to them? They don't want to understand. People have to understand, but they don't know how to understand. हमें उनको हेल्प करनी है, हमें उन्हें सहायता करनी है कि हम कुछ करें। कुछ नहीं करें तो शब्द शक्ति ही काफी है, क्योंकि हम जानते हैं कि शब्द में शक्ति होती है, और जब शब्द में शक्ति होती है, वाक ब्रह्म वेदों में भी कहा गया है, और कबीर ने भी कहा है कि साधो शब्द साधना कीजिए। तो ये शक्ति ही शायद हमें अभिमंत्रित करे और हमें शायद विश्व में कुछ ऐसा करे कि हम विश्व में फिर से शांति स्थापित हो। कविता से शांति स्थापित होती है ऐसा होता नहीं है।
या होता होगा तो हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपनी जगह चुपचाप नहीं बैठे रह सकते. That is why we have started Kritya Poetry East and West, and in that we try to bring one poet or two poets from the Western countries and two poets from the Eastern countries. Especially in India, एक ही देश में बहुत सी भाषाएं हैं, so we try to invite one from South India and one from North India, and sometimes we will invite other countries also, like from China, Vietnam, and other people also. So I'm thankful to everyone. Philip is very old friend, and he was there when we were fighting with Corona with poetry. And Kamalakar ji is the power behind this because he is organizing everything. Brajesh is helping in translation. And आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपका नाम बहुत सुना है, आपसे पहली बार रूबरू हुई हूँ. रमेश का नाम मैंने सुना है, शायद रमेश कभी आए भी हैं कृत्या में, मुझे ऐसा लगता है, जब कृत्या टॉक जब हमारी चल रही थी. अदरवाइज रमेश का नाम सुना है. आपसे आज मुलाकात हुई. आप सबका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार. Kamalakar. Thank you, Rati ji, for your concerns and the vision that you have shared with us. Now we turn to our poetry session. Our first poet this evening is Philip Nikolayev. Philip is a multilingual poet living in Boston. He holds 2 academic degrees from Harvard and a PhD from Boston University. His poetry has been published internationally, and his collections include Monkey Time, which won the Verse Prize, and The Letters from Aldenbury. His translations of Pushkin's poetry, The Star of Dazzling Ecstasy, was published in 2021. He serves as co-editor-in-chief of Fulcrum, an anthology of poetry and aesthetics. His work continues to move across languages and geographies. Philip, we are delighted and honored to have you with us. Thank you so much for agreeing to join Kritya-Poetry East and West. I now invite you to share your poems. And after thank you so much. First poem, Brajesh ji will read the translations. Yes, over to you, Philip. Thank you so much. I am afraid that my connection froze up for a moment, so I did not hear. Should I read them in the order that I submitted them in? Yes, I think that would be okay. Yeah, that would help. Oh, all right. So I'm starting with the first one then, but before I do that, I want to express my immense gratitude for being here. Rati ji, you are an old friend indeed, and it's not the first time that we're collaborating, and I'm proud to be associated with Kritya, and it's an honor for me to be translated and to be among you, my friends, in this wonderful company. A great pleasure. So without much further ado, let's go on with the poems. The first one is titled "Let's Be More Careful." Washing a handful of discount blueberries in my hand, I thought I was being completely careful, but I dropped one and it got squished. Thank God it's a mere blueberry, thought I. It could have been a person, a neighborhood, a village, or worse. Brajesh ji. So do we... धन्यवाद. पहली कविता जो उसका अनुवाद मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ. शीर्षक है आइए और ज्यादा एहतियात बरतें. मुट्ठी भर सस्ती ब्लूबेरियां अपनी हथेली में धोते हुए मुझे भान था कि मैं पूरी एहतियात बरत रहा हूँ. मुट्ठी भर सस्ती ब्लूबेरियां अपनी हथेली में धोते हुए मुझे भान था कि मैं पूरी एहतियात बरत रहा हूँ. फिर भी मेरे हाथ से एक फिसल गई और कुचल गई.
शुक्रिया प्रभु, मैंने सोचा यह तो मात्र ब्लूबेरी थी, अन्यथा यह कुछ भी हो सकता था। कोई इंसान, कोई बस्ती, कोई गांव या और भी भयावह कुछ। Wonderful to hear this. Thank you for this great translation. It's very sweet. It tickles me, it sort of stimulates me in a very pleasant way. Okay, so I will go on with the next poem then. Practice of being fine. Bright coins of rain tap out a song on the thin roof of the afternoon. You stand there practicing being fine as if it were a language to learn. The world keeps staging plain marvels, charges only your breath for admission. A bus exhales, a window warms, someone laughs like it's still allowed. You think of what you've lost and how politely it stays lost, never returning your calls. Even so, a worm surprised by daylight inches across the sidewalk, furious, alive. You don't get your old life back, you only get this one, held together by brave stitches of light along the imperfect seam under your ribs. उम्मीद है आप ठीक होंगे। दूसरी कविता का यह शीर्षक है हिंदी में। खुशी की तलाश में भटकते जीव, जो कि साफ तौर पर हम हैं। खुशी की तलाश में भटकते जीव, जो कि साफ तौर पर हम हैं। हम दूसरों के लिए और स्वयं के लिए भी अनवरत यही कामना करते हैं। ट्रेन में हल्की नीली रोशनी में दमकते चेहरे, अपनी हर शाम आंखें जमाए, होंठ बीछे, भित्ता और कोलाहल को स्क्रॉल करते अंगूठे, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। वह औरत बहुत देर से नजरें झुकाए है। इस आदमी की स्क्रीन पर किसी के इंतजार का अक्स भी नहीं है। हमारी खामोशी पटरियों पर गुनगुनाती है। थकान कोहरे सी जम रही है। मैं फोन पर यूं ही टाइप करता हूँ, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, या मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि अब ऐसी कोई उम्मीद शेष नहीं है। धन्यवाद। Oh, wonderful. Thank you so much. This is actually a translation of a different poem, not the one that I just read. But I will now read the poem that we just heard in this beautiful Hindi translation. This is the original text in English. Hope you're well. Creatures of the pursuit of happiness that we demonstrably are, we wish it upon others and ourselves alike, endlessly. On the train, faces glow in small blue light, each a private dusk, eyes fixed, lips tight, thumbs rolling through loss and chaos no one speaks of. That woman looks down too long. This man's screen reflects no one waiting. Our silence hums in the rails, fatigue gathers like mist. Hope you're well, I type phonily into the phone, or hope all is well with you, knowing too well there isn't any such hope. So, should I read the next one then? Yes, please. Yes. And then, okay, and then we'll see. Okay, so this one is called "The Mercy of Errors." You misread the email and stay home that evening. The train you meant to catch leaves in a hurry without you. You hear the insult wrong and answer with a shrug instead of fire.
You take the wrong street, find a bakery brightly lit at closing. The baker hands you fine bread he cannot sell and says, "Take, take." Your phone dies before you dispatch the brutally honest reply. By morning, your anger has lost its passport. You drop the last digit in the number and never reach that door. The catastrophe that waited there remains unemployed. Is there still time? You hear your bus depart like a verdict. In the silence that follows, your breath returns to you by and by. No one will ever prove that these were deletions by an invisible hand. Yet some nights, counting errors like mismatched socks, you feel watched over, whether by a plan or by a certain clumsy tenderness in things, as if the world kept tripping on purpose so you might keep walking. I think there may be another translation, right? राजेश, इसका ट्रांसलेशन है क्या? नहीं ना? कौन सी पोएम का ट्रांसलेशन है? कोल्ड सावर का किया हुआ है मैंने. कोल्ड सावर. Third poem is cold shower. I have translated. So should I read cold showers now? Yeah, please. Okay, wonderful. Thank you. It's so exciting for me. Thank you so much. I look forward to actually reading these translations with my eyes. It gives me a special thrill. So, cold showers. This is about that philosophical moment, that I think many people have experienced when you're in a strange place in someone's home or in a hotel. You get into the shower and you try to get the hot water running. You try to run the hot water and it's challenging. It can be challenging. So cold showers. Again, a new bathroom, a new logic. You stand there polite and naked as if manners mattered in plumbing. The handle is a riddle posed in chrome. Left promises warmth, right offers authority. Neither delivers. You try the obvious first, then the less obvious, then the ritual. Half turn, pause, half turn back, like negotiating with a deity who only answers in temperature. Somewhere hot water exists. You can feel it in the pipe's throat clearing, in a brief, smug burst that touches your shoulder and vanishes. You pretend you meant it, this bracing philosophy, this cold baptism in the hotel or in a strange home, because failing to ask would mean admitting the world has knobs you never learned to read. You wait, you adjust, you wait again. Adulthood, you think, is the practiced face of ease worn over not knowing. The patience to stand inside confusion without calling it fate, to keep turning the same small truth a fraction at a time, hoping warmth is real and not just a rumor in the pipes. Okay. फिर से एक नया बाथरूम, एक नया तर्क. तुम खड़े हो वहां नम्र और नग्न, मानो शिष्टाचार प्लम्बिंग के लिए हो. हैंडल क्रोम में पगी हुई कोई पहेली है. बाएं का वादा गर्माहट, दाएं का प्रस्ताव अधिकार, मगर पूरा कोई नहीं करता. तुम पहले ज्ञात तरीका आजमाते हो, फिर उससे कम ज्ञात, फिर वही रस्में, आधा घुमाना, रुकना, आधा वापस घुमाना, जैसे किसी देव से मोलभाव कर रहे, जो सिर्फ ताप में ही जवाब देता है. कहीं ना कहीं पानी गर्म मौजूद है, तुम उसे महसूसते हो पाइपों के गरारे करने में, इस छोटे इतराते झटके में जो तुम्हारे कंधे को स्पर्श कर
गायब हो जाता है। तुम दिखावा करते हो कि तुमने यही चाहा था, यह ताजगी भरा दर्शन। होटल या किसी अनजान घर में शीतल जल का यह बपतिस्मा, क्योंकि किसी को बुलाकर पूछने का मतलब यह है मानना कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें जानना तुमने कभी सीखा ही नहीं। तुम इंतजार करते हो, तुम खुद को ढालते हो, तुम फिर इंतजार करते हो। व्यस्कता, तुम सोचते हो सहज ही वह अभ्यस्त मुखौटा है जो अनजान होने के ऊपर पहना जाता है। भ्रम के बीच खड़े रहने का वह धैर्य जिसे तुम किस्मत का नाम देते हो, उस छोटी सी सच्चाई को बार बार घुमाते रहना, हर बार थोड़ा थोड़ा करके, इस उम्मीद में कि गर्माहट सचमुच मौजूद है, सिर्फ एक अफवाह नहीं है आयतों के भीतर। धन्यवाद। ये बहुत ही विचार फुल पॉइंट्स हैं, सभी तीनों पॉइंट्स। मुझे मैं बहुत आभारी हूँ कि तीनों कविताओं का अनुवाद करने के लिए मुझे दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। Philip. Thank you. This was wonderful to hear. And I think this concludes my participation, my part, and I'm deeply honored, and it was a great pleasure. I look forward to hearing the rest. Thank you. Thank you, Philip. Your poems move with a quiet, disarming intelligence where the ordinary opens into something deeply philosophical and humane. I was reminded of how precarious, absurd, and yet strangely protected our lives can feel. Thank you for revealing with such subtle wit and compassion the delicate balance between chance, loss, and the small mercies that keep us going. Thank you so much. Thank you Our kindly for next your poet- observation. Yes. Our next poet is Ramesh Aroli. Ramesh is an associate professor who teaches media studies at the Department of Journalism, Kamala Nehru College, University of Delhi. His doctoral research focused on the Kannada tabloid Lankesh Patrike, for which he received his PhD from JNU. Alongside his academic work, he is a significant contemporary voice in Kannada poetry. He has published 3 collections of poetry, and his narrative poems are widely appreciated for their fresh idiom and distinctive style. His poetry engages deeply with social realities and articulates the cultural aspirations of the marginalized communities. He is the recipient of several prestigious awards, including Puthi Narasimhachar Poetry Award and Dr. G.S. Shivarudrappa Poetry Award. Ramesh, we are honored to have you here and eager to listen to you. Please share your poems. Thank you so much, sir, for inviting me to this session, and I also thank Kritya-Poetry, organization for having me today in this second session. I think I have heard, I have joined and heard some of the sessions. Even Kannada poet friend Arif Raja also was invited to one of these sessions. So, sir, should I first read Kannada, then go for English translation? Will that be fine? Kamalakar sir, am I audible? Yes, you are audible. Please go ahead. Yeah. The title of my first poem is Endadaru Ondu Dina. I think this also got translated into Hindi. So I'll read this first poem, then I go for this rest. Endadaru Ondu Dina. ಅಲುಗದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ನೊಣಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಸಿದ ದಿನ. ಓಣಿ
ಲೈಟಿನ ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ಸದ್ದಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒರಗಿ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಕಾಗೆ ನಿನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಕಳಚಿಟ್ಟ ಇರುವೆ ಪುತ ಪುತನೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಚಿಮಣಿಗೆ ಗುಳೆ ನಡೆದ ದಿನ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವುದೆಂದರೆ ಅವಮಾನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಲಿಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕಾಲ ದಯಪಾಲಿಸದ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಾಯದಿರಲು ಕಲಿಸವರಿಗೆ. ಅಲೆದಲೆದು ಹೊಲ ಒಡ್ಡು ಕಾಡು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿಗೆ ತರುಚಿ ನೆತ್ತರು ಜಿನುಗಿದ ಆ ಡುಬ್ಬದ ಚರ್ಮದಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರ ಋಣ ಶೋರೂಮು ಸೇರಿದ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿಸು. ಹಾಗೆ ನೀರೆಂಬುದು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸರಕು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು. ನೆಲ ಅಗಿದು ಬೀಜ ಹೂಳಿದರೆ ಚಿಗುರೊಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ದಾನವನ್ನು, ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆಸೆದರೆ ಆಕಾಶ ತಲುಪಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನಿಧಾನವನ್ನು, ಪ್ರೇಮಿಸಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಒಂಟಿತನವನ್ನು, ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅಥವಾ ಕರುಗುವ ನೆರಳನ್ನು ಬೊಗಸೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು. ತಿಳಿಸು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ರುಂಡಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ದೇವನೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೇಗಿಲು, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ, ಟೈರು ಗಾಲಿ ದಾರಿ ತುಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆರಚಿದ ಗಾಳಿ ಕುಣಿದು ಕುಣಿಯಾದವರ ಮತ್ತು ಕುಣಿಗಳ ಮೇಲಾದ ದಾಳಿ ಅವನ ವಂಶಜರ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ನಾವದರ ಪರಿಣಾಮವೆಂಬುದನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ. Yeah, this is the Kannada. Yes, now Rati ji, please, if you can read the translation. You'll have to unmute your mic, ma'am. Yeah, I have translated only this poem and I like it. This is translated by Shiv Prakash ji in English, I think. किसी दिन जब मेरी बंद पलकों पर मक्खियां विश्राम कर रही होंगी, जब कौवा खंबे पर बैठा हो और खंबा जमीन पर टिका हो, आंगन में होने वाली बारिश को शुक्रिया तुम्हारी ओर उन्मुख होने के लिए। जब चींटियों के पर उतरने लगी, चींटियां बगल वाले घर की चिमनी में जाने के लिए कतार में लगी हों, बच्चों को सिखाना कि नंगे पांव चलना शर्म की बात नहीं है। उस करुणा को शुक्रिया जिसने हमें पांव का आशीष दिया। उन्हें सिखाएं कि नंगे पांव इंतजार न करें। उन्हें वह रहस्य बताएं उनके हम कर्जदार हैं, जिनकी खाल को खून निकलने तक खींचा जाता है किसी कस्बे के किसी लोहे के बाड़े से और फिर उसके सैंडल बनाए जाते हैं। हो सके तो उन्हें सिखाओ कि जल का जन्म स्थान बोतल नहीं है। उन्हें इंतजार करने का धैर्य सिखाओ। मंदिर की तिजोरी में एक सिक्के के लिए, आसमान छूने के लिए, आसमान के आंगन में जाने के लिए, जब ये फेंका जाए आसमान के आंगन में, अकेलापन स्नेह की कामना करता है। हथेलियां थामने के लिए, कमाई इकट्ठी करने के लिए, या फिर उन पिघलती परछाइयों उन्हें बताएं कि कोई ईश्वर पैदा हुआ जिनके सामने चींटियां अपना सिर समर्पित कर सकती हैं। हल, बैलगाड़ी, टायर से पहले सड़क की यात्रा आंखों में धूल उड़ाती थी। उन कब्रों पे हमला जिन्होंने गायब होने तक नृत्य किया, क्या यह उस ईश के वंशजों की साजिश है और क्या हम उनके परिणाम हैं? शुक्रिया। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा आपने अनुवाद किया इस कविता को। आपकी कविता बहुत अच्छी है और इसमें जो हमारी जो समस्या है उनको बहुत खूबसूरती से रखा है। मैं ये भी अंतर महसूस कर रही थी कि जब आप पढ़ते हैं कन्नड़ा में तो इसमें जो ध्वनि है वो बहुत अलग होती है जो हम हिंदी में पढ़ते हैं उसकी ध्वनि से। और ये जो ध्वनि है वो आपकी कविता को अनुवाद में शक्ति दे देती है, क्योंकि अगर मैं आपकी तरह कन्नड़ा हिंदी में पढ़ूंगी तो वो अर्थ नहीं रहेगा। और इसीलिए जब हिंदी में हम पढ़ते हैं उसको तो उसका
अलग अर्थ हो जाता है। लेकिन बहुत खूबसूरत कविता है। मुझे दुख है कि मैंने दूसरी कविता का अनुवाद नहीं किया। ये भी पहला अनुवाद है, फर्स्ट है, मैंने इसको पढ़ा भी पहले टाइम है। शुक्रिया, आगे बढ़े। Yes, thank you, thank you. The second poem that I'm going to read is Bidu Saku ee Kedugalakkistu. Here it goes. Bidu Saku ee Kedugalakkistu. ಸೌರ್ಯಮಾನದ ಪಾಡ್ಯಮಿಗೆ ಗಿಜಿಗುಡುವ ಈ ಅರೆಗುರುಡರ ಹಳೆ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಅರೆ ಚಂದ್ರಮಾನ ಮೆಳ್ಳುಗಣ್ಣುಗಳಾದರೂ ಸಂಧಿಸಿವೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು. ಪಾವು ಸಗಣಿಗೂ ದರ ತಂದ ಈ ಶಿಥಿಲ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದನದ ಕತೆ ನೊಣ ಕೇಳದ ಗಲ್ಲಿಯಲಿ ಈ ಕಿವುಡರಿಬ್ಬರ ನುಡಿಗಳಾದರೂ ಚಿಗುರುವೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು. ಕಟ್ಟು ರಾಖಿ ಇಲ್ಲ ತಾಳಿ ಎಂದೆಬ್ಬರಿಸಿದ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಕ್ಕರಿಸಿದ ನಗರದ ಈ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪೊಟರೆ ಒಳಗೆರಡು ಗಿಳಿಯಾದರೂ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿವೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು. ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಾಳಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ನಡುವೆ ಮೂಗರಿಬ್ಬರ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಕೇಳಿ ಎಲೆಗಳಾದರೂ ಅಲುಗುವಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು. ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಬಾರದು ಎಂದ ಮಾತಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನಿಲ್ಲಿ, ಪಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯಾದರೂ ಪಾದ ನೆಕ್ಕಿದವಲ್ಲ, ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು. ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಮೈಕಿ ನಬ್ಬರವಾದ ಈ ವಿಷಮ ಋತುವಿಗೆ ಗೇಣು ನೆಲ ಜಗಳಾದಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಎಸೆದ ಚೆಂಡನು ಆಕಾಶವಾದರೂ ಮರಳಿಕೊಟ್ಟಿತಲ್ಲ, ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು. ಬೇಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳೆಂದು ಅಗಳು ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡವರ ನಡುವೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡದವನಿಗೂ ಎರಡು ಭುಜ ಸಿಕ್ಕವಲ್ಲ, ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು. ಧರಣಿ ಮುಷ್ಕರದೆಲೆ ತೋರಣ ಈ ಊರ ದಾರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಹ ಶಾಮಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಾದರೂ ಶಾಮೀಲಾಗಿವೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು. ಮಾವಿನೆಲೆ ಕಬ್ಬು ಬೇವಿನೆಲೆ ಸವಿ ರುಬ್ಬು ನಾಲಗೆಗೆ ಪೇಟೆ ಎಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇರಿ ಎಂದರೆ ದಾನವೆಂದಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲಿನ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಾದರೂ ಮರಿ ಹಾಕಿತಲ್ಲ, ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು. ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು. I'm going to read the Kannada translation. This poem is translated into English by Professor H.S. Prakash. The title of the poem is Well, This is Enough for These Bad Times. On the first day of the solar year, in the old buzzing bazaar of the half-blind, at least these two squint eyes have met. Well, this is enough for these bad times. In this brittle spring, when even the cow dung has fixed price, in the secluded lane, where the fly refuses to listen to the story of the cattle in the fold, at least these two deaf people are listening to each other. Well, this is enough for these bad times. In this year which road, give me a Raki, oh brother, give me a marriage sting, oh husband. At least two parrots are twittering. Well, this is enough for these bad times. In reply to ad companies, Happy New Year, in the midst of the gossip of the delighted, at least the leaves are waving, watching the gestures of two deaf people. Well, this is enough for these bad times. Reading to the command, don't fall in love according to the almanac, my eyes turned stone blind, listening to the sobs. At least two stray dogs started licking my feet. Well, this is enough for these bad times. In this critical season, when festivals are reduced to roaring mics at the village court, in between disputes over centimeter of land, at least the ball that the boy threw up, the sky returned to him. Well, this is enough for these bad times. The ants never asked for the arms of grains of rice. Look, amidst
Those feeding ants on sugar, on that never solid anything, got the support of 2 soldiers. Well, this is enough for these bad times. In this town whose roads are decorated with the festoons of the fresh leaves, inside the tents echoing with protesting voices, at least 2 fingers are coming together. Well, this is enough for these bad times. On the New Year's Day of the sugarcane and neem leaves, when streets are full of beggars and lanes of almsgivers, at least a chicken egg was hatched. Well, this is enough for these bad times. So this is that poem translated by Professor Chashi Prakash. So now I am going to present my third poem, which is a narrative poem, and this is a lullaby. I wrote this poem when I was traveling in a train. A young mother who could not, who was unable to make her baby sleep in the night. So I saw that situation, like, baby was crying, the young mother could not make her sleep, and she could not even sing a few lines of lullaby so that that the baby could sleep. So that was the situation that when this poem was stuck. So the title of the poem in Kannada is unfortunately I don't have a translation of this narrative poem. So the title of the poem is Naguva Kaddavaryare Muddu Magu. So here it goes. Jo 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 lali alabada malagova jo lali jo 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 lali alabada malagova jo lali nidde kaddavaryare jo lali naguva kaddavaryare jo lali hogu hogava jo lali ನಿದ್ದೆಯ ಊರಿಗೆ ಜೋಲಾಲಿ ಬೈದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಜೋಲಾಲಿ ಜೋಗುಳ ಹಾಡ್ಯಾರ ಜೋಲಾಲಿ ಹೊಡೆದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜೋಲಾಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟ್ಯಾರ ಜೋಲಾಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ ಹಡೆದವ್ವ ಜೋಲಾಲಿ ತಡಯಾಕ ಬಾರವ್ವ ಜೋಲಾಲಿ ಒಣಗಿದ ತುಟಿ ನಿನ್ನ ಜೋಲಾಲಿ ಬೆರಳಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಯಾದ ಜೋಲಾಲಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಊರೊಂದು ಜೋಲಾಲಿ ನಟ್ಟ ನಡುವರ ಮಾನೆ ಜೋಲಾಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿರಿ ಉಂಟು ಜೋಲಾಲಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ ಇಲ್ಲ ಜೋಲಾಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಗಿದವಂತೆ ಜೋಲಾಲಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಸದ್ದಿಲ್ಲ ಜೋಲಾಲಿ ಪಾತಾರ ಗಿತ್ತಿಗೆ ಜೋಲಾಲಿ ಯಾತಾರ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಜೋಲಾಲಿ ದೊಂದಿ ಉರಿಯಾಲಿಲ್ಲ ಜೋಲಾಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಜೋಲಾಲಿ ಈಟಿ ಇರಿದವಂತೆ ಜೋಲಾಲಿ ಯಾರಿತ್ತ ಶಾಪಾವೋ ಜೋಲಾಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾವಂತೆ ಜೋಲಾಲಿ ಚಂದ್ರಮನ ಕರೆಯವ್ವ ಜೋಲಾಲಿ ಹೂದಂಡೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಜೋಲಾಲಿ ಉಗಳಮ್ಮ ಮಕರಂದ ಜೋಲಾಲಿ ಹಸುವ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಜೋಲಾಲಿ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕೂಗ್ಯಾವ ಜೋಲಾಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಗಿಲಕಿ ಹಿಡಿದು ಜೋಲಾಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರೆದವ ಜೋಲಾಲಿ ಹಂಗಾಮದವರೆಲ್ಲ ಜೋಲಾಲಿ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಕಾದಾರ ಜೋಲಾಲಿ ಹನುಮ ದೇವನೆ ಖುದ್ದು ಜೋಲಾಲಿ ಕರೆಯೋಲೆ ತಂದನ ಜೋಲಾಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಕಂದ ಜೋಲಾಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಏಳವ್ವ ಜೋಲಾಲಿ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ನಿನಗೆ ಜೋಲಾಲಿ ಗಾಳಿ ದಿಂಬು ನಿನಗೆ ಜೋಲಾಲಿ ಜೋ 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 ಜೋಲಾಲಿ ಅಳಬ್ಯಾಡ ಮಲಗವ್ವ ಜೋಲಾಲಿ
ಅಳುಬ್ಯಾಡ ಮಲಗವ್ವ ಜೋಲಾಲಿ, ಅಳುಬ್ಯಾಡ ಮಲಗವ್ವ ಜೋಲಾಲಿ. Yeah, this is So lullaby. beautiful. I will like to translate this into Hindi because this is actually something which we need in this modern time. Um, our modern mothers forgotten to sing lori. No? We call it lori, lullaby. We call Yes. it lori. Yes. Modern mothers are not singing, and they do not create. In our time, mothers used to create on the spot. Yes. So I used to make my baby sleep by singing this song. Like, and I use this lullaby to make my baby sleep. Wonderful, Rameshji. Wonderful. And I made for my granddaughter on the spot. I used to sing. I am a very bad singer, but she liked it. Okay, next point. Can I read one more poem, sir, ma'am? Kamlesh. Yes, Ramesh, please read one more. Yeah. So this is a ghazal which I wrote about Umar Khalid, a friend from JNU, who been in jail without any inquiry, without any hearing proper, like investigation and all. So here it goes. I'll read for Kannada first, then there's an English translation by Dr. Kamalakar Bhatt. So here it goes in Kannada. ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಪಾಪವನ್ನು ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಣುವವರೆಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಉಮರ್. ಅಮ್ಮಿಯ ಕೈ ತುತ್ತಿಗೆಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರ ರುಚಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಗಳು ಅಗೆಯುವವರೆಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಉಮರ್. ಸೂರ್ಯನ ನುಂಗಿದ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿರುವೆ ನೀನು, ಕತ್ತಲು ಕದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಕಟೆ ಕಟೆಗೆ ಎಳೆದರು ನಿನ್ನ. ಪ್ರತಿ ಋತು ಒಣಗಿದೆಲೆ ತೂರಿ ಮಣ್ಣರೆಚಬಹುದೆಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವವರೆಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಉಮರ್. ಆ ಗಡ್ಡ, ಚದುರಿದ ತಲೆಗೂದಲು, ದೊಗಳೆ ಜುಬ್ಬ ಸದಾ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅನ್ನುವ ಹಬ್ಬ. ಸರಪಳಿ ಆಚೆಯು ಒಂದು ನರಜಗ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಸುವವರೆಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಉಮರ್. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಹೊತ್ತು ಉಸಿರಾಟವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎನ್ನುವಂತಾಯಿತು. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಹೊತ್ತು ಉಸಿರಾಟವೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎನ್ನುವಂತಾಯಿತು. ಕಡಿದ ಜಾಗದಿ ಚಿಗುರೊಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಉಳಿದ ಬೇರನ್ನು ತಾಕುವವರೆಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಉಮರ್. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕರಿಗಿವೆ ಇಲಿಯ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ರಂಗಿನ ಕರಪತ್ರ ಹಂಚುತ್ತಿವೆ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು. ಪಾಷಾಣದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿನ್ನ ಕೇಳುವವರೆಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಉಮರ್. ನಿನ್ನ ಕೇಳುವವರೆಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಉಮರ್. The translation done by Dr. Kamalakar Bhatt. Oh, sun-swallowing black ant, I never knew a sacred sin could take such a shape. Not until I saw you, Umar. I never knew that a morsel from a mother's hand could taste of tears. Not until I chewed it, Umar. You are a sun-swallowing black ant. They dragged you to the prison, accusing you of stealing darkness. I never knew that every season could hurl dried leaves and deceive. Not until the wind began to blow, Umar. That beard, those unkept curls, the loose jubba you wear, how they are being told to trim, to fit, to fade. I never knew that even beyond iron chains, a human world could exist. Not until I met you, your gaze, Umar. When even the wind acts as the master of mouse, even breathing becomes an act of rebellion. I never knew that new shoots spring forth from the very place of the cut. Not until fingers touched the remaining roots, Umar. In the
alleyways, a cat hands out colored pamphlets. Even mice have rights, it proclaims in Amin's name. I never knew that poisonous speeches could be discounted. Not until I heard the weight of your words, Umar. Not until I heard the weight of your words, Umar. Thank you. Kamalakar ji. Yes, Ramesh, are you going to read one more or sing one more? If you permit, I can sing one more song. Yeah, that would be lovely. Yes, thank you so much. So this is again a song, a narrative poem. It's about mobile, which has snatched away the silence of the world. So it's like the title of the Kannada title is Banu Nive Hanchikolli. You distribute the sky yourself. Here it goes. ಎತ್ತಾರೆತ್ತರ ಬಾನಿನೆತ್ತರ ಗುಡ್ಡಕ ಕರಿಕಲ್ಲು ಗಿಡದ ಬುಡಕ ನೆಡು ಹುಲ್ಲು ಅಗಲ ಅಗಲ ಅದು ಮಾತಿನ ಹಗಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಹಲ್ಲು ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟಿತು ಬರಿ ಸೊಲ್ಲು ಕಿಳಿ ಬಾರವು ಗೂಬೆ ಕೂಡವು ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟರಿನ ಗುಟುರು ಕೇಳದಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಇದ್ದವು ಹಣ್ಣು ಮೇದವು ಊರ ಬದುವಿನ್ಯಾಗ ಯಾರೋ ನದುರು ಬಿಟ್ಟರೀಗ ಎದೆ ಗೂಡಿನ ಮಾತು ನಿಂತವು ಕಂಪನಿ ಬರೆದಾಗ ರಂಗಿನ ಗೋಡೆ ಶಹರದಾಗ ಕುಲ ಗೋತ್ರಕ ಬಣ್ಣ ಬಳೆದನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೌಡಣ್ಣ ಜೋಪಡಿ ಜಾಗ ನೀಡಿರಣ್ಣ ಅರೆ ಬೊಕ್ಕಣ ಅಲೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೀರುತ್ತಾವ ಕೆಳಗ ಸತ್ತು ಸೇರುತ್ತಾವ ಬಯಲು ಬಯಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲು ಆಗಿ ಮಾತ ಕಸಿಯುತ್ತಾವ ಕಿವಿಯ ಮೌನ ಮುರಿಯುತ್ತಾವ ಊರ ಊರಿಗೆ ಅದರ ತೇರಿಗೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕೊಕ್ಕಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೋಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಾಳಿ ಕಲ್ಲು ಕೋಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಖಾತರಿ ಕಿವಿಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಾನು ನೀವೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಾನು ನೀವೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. Lovely. Thank you, Ramesh, for that powerful and moving reading. Yeah, and I have always felt that your poetry carries a kind of compelling energy, especially your narrative poetry. There is a kind of an urgency in your voice and a deep empathy. Thank you for sharing such a vital poems with us. Now we turn to Sarfaraz Alam, who is a professor of geography at the Institute of Science, Banaras Hindu University, Varanasi. His work spans social and political geography and the history of geographical thought, focusing on South Asia. Alongside his widely published scholarly work in the field of geography, he writes poetry in Hindustan. His collection, Naksha Nama, published in 2023, and Naksha Kashi, which was published very recently, 2026, reinterpret maps as sites of power and human consequence, transforming geographical knowledge into a deeply humanistic, affective sensibility that foregrounds connection over division and imagines a borderless South Asia. So, Sarfaraz, we are very happy to have you with us today, and I invite you to present your poems. Sarfaraz will read his poems in Hindi, and I will read the translations into the English translations. Okay, thank you. At the outset, I would like to thank Kritya-Poetry, East and West.
in particular Rati Saxena madam and Kamalakar Bhatt sir. And I'm deeply honored to be part of this galaxy of poets and translators. And it has been a lovely experience listening to Philip, Ramesh, and Brajesh ji. And the poem that I am going to read, basically these are all very small poems. So I'll have luxury of reciting many poems so that I can make use of those times. So I'll start with the first poem, Naya Shahar. मैंने पूछा फिर कब मिलोगी, मैंने पूछा फिर कब मिलोगी, तुमने कहा कल। मैंने पूछा फिर कब मिलोगी, तुमने कहा कल। मैंने पूछा कहाँ मिलोगी, मैंने पूछा कहाँ मिलोगी, तुमने कहा नक्शे पर। मैंने पूछा कहाँ मिलोगी, तुमने कहा नक्शे पर। फिर मैंने पूछा नक्शे पर कहाँ, तुमने कहा किसी नए शहर में। फिर मैंने पूछा नक्शे पर कहाँ, तुमने कहा किसी नए शहर में। मैं दुनिया के नक्शे में एक नया शहर बनाने लगा, मैं दुनिया के नक्शे में एक नया शहर बनाने लगा। Sarfaraz's poems have been translated by Dr. Anuradha Banerjee, and I will read the translation now. New City. I asked, when will we meet again? You said, tomorrow. I asked, where will we meet? You said, on the map. Then I asked, where on the map? You said, in a new city. In the map of the world, I started sketching a new city. Thank you. अब मैं दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक है यात्रा। दुनिया के नक्शे पर एक दूसरे का हाथ थामे, दुनिया के नक्शे पर एक दूसरे का हाथ थामे, एक छोटी सी यादगार यात्रा के बाद हम एक अनजान मोड़ पर ठहर कर एक दूसरे की आंखों में देर तक निहारते हैं। तुम्हें मेरी आंखों में एक सुनहरा रास्ता दिखता है और मुझे तुम्हारी आंखों में एक सुनहरा रास्ता। अब आगे की यात्रा तुम मेरी आंखों में बने नक्शे के सहारे कर रही हो और मैं तुम्हारी आंखों में बने नक्शे के सहारे। अब हम दोनों ही एक बेहद खूबसूरत प्रदेश की यात्री बन चुके हैं। मैं तुम्हारी आंखों में यात्रा कर रहा हूं और तुम मेरी आंखों में। Journey. This poem also has been translated by Dr. Anuradha Banerjee. On the map of the world, holding each other's hands after a memorable journey, halting at an unknown turn, we look into each other's eyes for a long time. And I see in your eyes a golden path. Now the journey ahead of you continue with the help of the map drawn in my eyes, and I, with the help of the map, created in your eyes. Now, both of us have become travelers of the most beautiful province. I am traversing with your eyes. You are traversing with mine. तीसरी कविता है, उसका शीर्षक है मंगूराम। पिछले बरस सूखे में मंगूराम अपना गांव छोड़कर किसी बड़े शहर को गया। पिछले बरस के सूखे में मंगूराम अपना गांव छोड़कर किसी बड़े शहर को गया रोजगार की तलाश में। जबकि इस बरस गांव में खूब वृष्टि हुई है, जबकि इस बार गांव में
खूब वृष्टि हुई है, फिर भी मंगूराम अपने गांव को नहीं लौटा। मंगूराम कहाँ है? उसका पता किसी भी गांव वाले के पास नहीं है। क्या जिले का नक्शा नवीस अपने नक्शे से दिखा पाएगा मंगूराम कहाँ है और कैसा है? Mangura. During last year's drought, leaving his own village, Manguram went to some big city in search of a livelihood. Though this year it has rained profusely in the village, Manguram hasn't come back to his village. Where is Manguram these days? No villager has any clue about his whereabouts. Will the district cartographer in his drawings be able to point out where is Manguram right now and how is he? थैंक यू। अगली कविता है, इसका शीर्षक है जुल्मात के दिनों के नक्शे। जुल्मात के दिनों के नक्शे में दुख की पहाड़ियां क्यों नहीं दिखती? जुल्मात के दिनों के नक्शे में दर्द की नदियां क्यों नहीं बहती? जुल्मात के दिनों के नक्शे में खून के छींटे क्यों फीके हैं? जुल्मात के दिनों के नक्शे में जालिम के खंजर क्यों छिपे हैं? जुल्मात के दिनों के नक्शे से दुख की पहाड़ियों को किसने हटाया? जुल्मात के दिनों के नक्शे से दर्द की नदियों को किसने मिटाया? जुल्मात के दिनों के नक्शे से खून के छींटों को किसने धोया? जुल्मात के दिनों के नक्शे से जुल्म के खंजर किसने छिपाए? जुल्मात के दिनों के नक्शे किसने बनाए? थैंक यू। Dark days. On the map of dark days, why are the mountains of sorrow not seen? On the map of the dark days, why don't the rivers of sorrow flow? On the map of the dark days, why are the spots of blood pale? On the map of the dark days, why the weapons of the tyrant are kept hidden? From the map of the dark days, who has deleted the mountains of sorrow? From the map of the dark days, who has washed off the spots of blood? From the map of the dark days, who has hidden away weapons of torture? Who has drawn the maps of dark days? थैंक यू सर। अगली कविता है जिसका शीर्षक है मेरे मन की स्थिति। मैं कहाँ हूं और मेरा मन कहाँ है? दुनिया का हर एक नक्शाकार मेरी अभी की भौगोलिक स्थिति दुनिया के नक्शे पर बता सकता है। दुनिया का हर एक नक्शाकार मेरी अभी की भौगोलिक स्थिति दुनिया के नक्शे पर बता सकता है, पर वो सिर्फ तुम हो जो बता सकती हो कि मेरा मन अभी कहाँ है। The state of my heart. Where am I? And where is my heart? Each cartographer of the world can detect my physical presence on the map of the world. But it's you alone who can tell where is my heart right now. Thank you. Thank you. Now I will read some of the poems which have not been translated. And in this line, I am going to read the first poem from the book Nakshanama. The title of this poem is नक्शे गवाही देते हैं। इतिहास के करवट लेने से दुनिया का भूगोल बनता और बिगड़ता है। इतिहास के करवट लेने से दुनिया का भूगोल बनता और बिगड़ता है, जिसका दस्तावेज नक्शा नवीस तैयार करते हैं। जिसका दस्तावेज नक्शा नवीस तैयार करते हैं कागज के पन्नों पर प्रतीकों, चिन्हों और रंगों से। इतिहास के करवट लेने से दुनिया का भूगोल बनता और बिगड़ता है, जिसका दस्तावेज नक्शा नवीस तैयार करता है
कागज के पन्नों पर प्रतीकों, चिन्हों और रंगों से, जो गवाही देते हैं हमारे इतिहास की करवट लेने की, जो गवाही देते हैं हमारे इतिहास के करवट लेने की, जिसके पन्नों पे लिखा होता है टूटना, बिखरना, संघर्ष करना और फिर से जुड़ना, जिसके पन्नों पर लिखा होता है टूटना, बिखरना, संघर्ष करना और फिर से जुड़ना। शुक्रिया। अगली कविता है, अगली कविता है जी, कैन आई कंटिन्यू और ओके? एक दो और सुनाइए। जी जी। नक्शा एक वैचारिकी अस्त्र शीर्षक है इस कविता का। सत्ता के स्वार्थ से गढ़ी गई ये दुनिया महज एक वस्तुनिष्ठ वस्तु नहीं हो सकती। सत्ता के स्वार्थ से गढ़ी गई ये दुनिया महज एक वस्तुनिष्ठ वस्तु नहीं हो सकती। ऐसे में दुनिया को दिखाने की कला मात्र एक कला कैसे हो सकती है? ऐसे में दुनिया को दिखाने की कला मात्र एक कला कैसे हो सकती है? नक्शा नवीसी महज एक कला नहीं है। नक्शा नवीसी महज एक कला नहीं है। नक्शा नवीसी एक वैचारिकी है और नक्शा एक वैचारिकी अस्त्र। नक्शा नवीसी एक वैचारिकी है और नक्शा एक वैचारिक अस्त्र। एक और कविता सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है राष्ट्रवादी नक्शे। तुम्हारे बनाए इस नक्शे पर जब भी उंगलियां, तुम्हारे बनाए हुए इस नक्शे पर जब भी अपनी उंगलियां प्यार से फेरता हूं, इसका खोखलापन महसूस करता हूं। तुम्हारे बनाए हुए इस नक्शे पर जब भी अपनी उंगलियां प्यार से फेरता हूं, इसका खोखलापन महसूस करता हूं। जब उंगलियों को इसके केंद्र में फेरता हूं, जंगल में लगी आग से उंगलियां जल जाती हैं। जब उंगलियों को इसके केंद्र में फेरता हूं, जंगल में लगी आग से उंगलियां जल जाती हैं और जब उंगलियों को इसके सीमाओं की तरफ फेरता हूं तो उंगलियां बर्फ की शीतलता से ठिठुर जाती हैं। मुझे इस नक्शे के मध्य में लगी आग को बुझाना है। मुझे इस नक्शे के मध्य में लगी आग को बुझाना है और सरहदों पर जमी बर्फ को पिघलाना है। बहुत शुक्रिया। Thank you, Professor Alam. So, if we have time, otherwise I can stop here. No, you can read one more, no problem. There is time. Okay. Okay. So, इसका शीर्षक है अफ्रीका का पश्चिमी तट। ये अफ्रीका के नक्शे पर जब भी यात्राएं करता हूं, अफ्रीका के नक्शे पर जब भी यात्राएं करता हूं और घूमते घूमते जैसे ही उसके पश्चिमी तट की ओर पहुंचता हूं, टकराती हैं मेरी नजरों से कुछ अजीब जगहों के नाम। अफ्रीका के नक्शे पर जब भी यात्राएं करता हूं और घूमते घूमते जैसे ही उसके पश्चिमी तट की ओर पहुंचता हूं, टकराते हैं मेरी नजरों से कुछ अजीब जगहों के नाम। ग्रेन कोस्ट, जहां अनाज पैदा होता था यूरोप का पेट भरने के लिए। गोल्ड कोस्ट, जहां से सोना भेजा जाता था यूरोप के बैंकों के लिए। टूथ कोस्ट या आइवरी कोस्ट, जहां हाथियों का शिकार होता था दांतों के लिए जो यूरोप के घरों में सजते थे। और फिर स्लेव कोस्ट, जहां से गुलाम निर्यात होते थे साम्राज्य के खेतों और खानों के लिए। ये सारे नाम कुछ कहते हैं। ये सारे नाम कुछ कहते हैं इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, अफ्रीका के इतिहास और भूगोल के बारे में, अफ्रीका के इतिहास और भूगोल के बारे में, यूरोप के इतिहास और भूगोल के बारे में, और शायद
विश्व के इतिहास और भूगोल के बारे में भी, और शायद विश्व के इतिहास और भूगोल के बारे में भी। शुक्रिया। Excellent. Excellent. Thank you. Thank you, Professor Alam, for those very thoughtful and evocative reading. Your poems, I have what kind of caught my attention when I first started reading your poems was, how you make us, look at maps anew, not as fixed diagrams, but as living human spaces shaped by longing and memory and loss, So you kind of transform geography into deeply felt human experience, reminding us that the truest maps are not on paper, but they are written in heart, so to say. So thank you so much. Actually, we have more time. So I was wondering if all the three poets can read us some more poems, isn't it, Ratiji? We still have quite a bit of time. I think we have started early, no? So it is better if they want any say Yes. something, Okay. that is better now because we have. Yeah, we can. So Yeah, we can share some responses. So maybe you can begin, ma'am. No, I think Philip, can you say something about the poetry and contemporary situation? Philip? Philip is actually has a problem with this. Yes. Philip, Can you guys hear me? Yeah, please, Philip. Well, I mean, there is so much to say there's so much that could potentially be said, but it occurs to me that there is one aspect of what's going on here in the United States that deeply bothers me. It's the cruelty that's being Philip done. Nikolayev poem SOP 2025 in memory of Lenin. This is why we're What posting is this? Cap I'm N1. sorry, one second. Can you guys hear me? There was a... Yes, okay. Hello? We can hear you. We can hear you. Okay, great. Okay, I am trying to open a poem that I was going to read. Sorry about the confusion. Something is stuck here. Let's see. I can open it in another file. One second. The deportations of immigrants here in the United States are breaking my heart, and it's like, there are many things that can be talked about, but this is on my mind a lot. I hate the cruelty that's being done to people. So I have this poem that I will read, if that's okay. It's not that long. It's called the Actual City. It's also about maps. You keep two maps of the city folded under your ribs. One is the glossy one they hand you at the airport, all skyline, museums, the river as a vein of gold. The other is drawn by footsteps of need. On that one, you circle the church basement that serves as a food pantry for 3 hours on Tuesdays. You underline the supermarket that waits until night to offer bruised fruit you can barely afford. You mark with a star the ESL, English as a second language, the ESL classroom above the laundromat, where your tongue beats its wings like a hurt bird. You memorize the faces of the bus drivers who lower the step when you arrive breathless, overburdened. Parks are no longer green, but graded zones of risk. This bench is safe until dusk. That corner is a hole in the world. In red, you trace the office where the clerk once lifted her eyes, spoke slowly, each syllable a fragile bridge toward you. Your city is stitched from want and small permissions, from streets your panic keeps blank and unnamed, from alleys you hope always sketches back into existence. In impressive buildings you never enter,
They legislate against your presence. They call you a crisis, passing bills that turn doorways into traps. Yet here, on this corner, the world pauses for your breath, and a total stranger says, "Take your time, I'm here." And the whole city brightens and darkens at the same moment inside you. I guess this is what I would like to take this opportunity to say about the current moment. Beautiful. Actually, this is happening in every big city. If you see the Hong Kong, and then also you can find these two cities in one city, in Bombay. At least Bombay, it is openly, and Delhi, Bombay, all that. But you see the Hong Kong, Singapore, these big places have two words. One is very dark and one is very, very shining and lighting. And that's what modern politics is taking to human. Darker is Right. getting darker, and brighter are getting more bright. Is more bright. शहशाह जी, आप बोलेंगे कुछ बोलना चाहेंगे? No, sorry, सरफराज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सरफराज जी. Yeah. हाँ, That's, what you said is very right. I mean, it is said that every city has two cities, the city of the rich and the city of the poor. And the way the cities are getting restructured everywhere. I mean, there are safer cities, there are violent cities in the same city. So last time I was in one of the African cities, and the city looked very beautiful. And I asked the driver, your city is really beautiful. So he retorted and said that it depends on where you look at the city from. So you are here in the most developed part of the city, but the part of the city from where I come is one of the most degraded part of the city, one of the most crime-infested part of the city. So the kind of the model that we have adopted for the development, so it's creating a very, very dichotomous society, and that society is clearly reflected in geographical space. So the geographical space that we see now is nothing but a reflection of deeply unequal social and economic processes that is happening not only at the level of city, but at the level of the world also. So this is what I have to say. I hear you. रमेश जी, रमेश. मैम, जो भी मुझे कहना था वो कविता में मैंने कह दिया. हाँ, वही Okay. दुख सारे संसार में भरा हुआ है, especially like in this time of crisis. Maybe poetry is the very powerful medium through which we can capture the sorrow of the world and express it to the words and songs. We need at least these little spaces where we can gather and exchange the pain of the communities and the world. Yeah. Thank you. कमलाकर जी, आप बोले. Yes, ma'am, would you like to? Why didn't you respond? say something? Why didn't you say something about this topic? Yeah. What I feel is that so much of poetry is being written about these kind of crisis that we periodically go through. Right now, the war, somebody is, as Ratiji was saying in the earlier, somebody has decided to go into a war, and everyone else has to pay for it, and they have to pay for it with much more than the ones who are waging the war. So this is very, very sad. I don't know how to respond to this, and the only thing that I think we poets and poetry lovers can do is to
use poetry as a medium to create as much empathy, as much responsiveness as possible. And I think that is the kind of poems that, that's how I kind of respond to the poems that we read today. There's a lot of responsiveness that these poems seek and seem to cultivate in us. And that is something that I really loved about each of the poem that was read today. And that's something that I also see happening around. Thank you. Actually, this is the problem. यही तो problem है. Philip knows Hindi well, so I will speak in Hindi. Okay. So यही problem है कि हम कविता का उपयोग कर रहे हैं. We are using poetry. We are writing. But in writing also, whether we are writing for society or we are writing for ourselves, this question also comes. आज जो कविता जो लिखी जा रही है, इसमें एक समस्या हो रही है कि वो किसके लिए लिखी जा रही है, हमारे लिए, खुद के लिए या समाज के लिए. हम समाज के बारे में लिखते हैं, लेकिन वो कभी कभी सिर्फ एक अपने लिए होता है, जस्ट सिर्फ जैसे आत्म प्रदर्शन उसके रूप में भी होता है. हम जो ये मंच कर रहे हैं, इस मंच में हमारी यही इच्छा है कि मतलब जो डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री वी ब्रिंग इन वन स्टेज. बट यू नो दैट all people from different, these Philip does not know Ramesh and Ramesh does not know Sarfaraz ji, but there is a rhythm between them. They never meet before, but there is rhythm. When Philip talks about the shower in a new, this is a different kind of way to see the world and difference. Same time that Ramesh is also talking about that. This I like a line very much that he says that teach children that there is no shame in walking barefoot, because they should know that these shoes are made by removing the skin of someone alive to protect us. So there is no shame in that. So how to teach children what to say, how to make this world good? And that is the thing. Then when Sarfaraz is talking about the maps, that this is actually, we had in Kritya last year, we had the whole system, whole poetry reading 1 week for the Africa country, because African countries, the poets were fighting for this thing, because all their assets, their things, money and everything was going to France. The Paris was getting light because of African countries, and those poets came up and talk about it. But this kind of things can be destroyed very easily. Sometime one person, sometime another person rule the nation and rule the whole world. तो लास्ट ईयर हम लोगों ने ऐसा किया था, और उसमें हमने जो डिफरेंट वॉइस आई थी अफ्रीका से, बट पेनफुल थी कि उनके यहाँ खाना नहीं है, लेकिन खाना सारा के सारा फ्रांस में जा रहा है, जबकि वो उनके अधीन नहीं है. They are free countries, but still because of something it happens. Same thing is happening, that Venezuela have gone there, and Venezuela, now the people are hungry, and just for what? For the neighboring country, for neighboring countries' ego or whatever it says. So that is why we bring this poetry reading, and we find that all poets are
speaking in a same direction. And this is the, we feel that there is a hope in this world that at least few of us are doing our duty, and we are trying to trying for the humanity. So यही हमारा उद्देश्य रहा है, और हम अभी एक महीने में एक बार ही ये करते हैं और एक बार समीक्षा करते हैं, 2 ही बार करते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि दोनों अभी सेशंस बहुत अच्छे हुए हैं। कमलाकर जी, अब हम क्लोज अप कर सकते हैं, राउंड अप कर सकते हैं। Yes, Kamalakar. thank you. Yes, thank you. Thank you, Philip, Ramesh, and Sarfaraz for your generous and enriching readings. Thank you, Brijesh ji, for your translations and your participation. Thank you, Rati, Saxena ji. Thank you all for being part of this journey, and we look forward to meeting you again in the next session of Kritya-Poetry East and West. It will be a book talk, and it is scheduled for 17th April, same time. We will be discussing the Hindi translation of the iconic Sindhi poet Shah Abdul Latif. The collection is called Kahe Latif. It's a translation by Rita Kothari, premier translation scholar and ace translator, and we will be talking about that book. So please join us. And I also would like to thank all the audience who have joined us. Good night. Take care. See you again. Good night. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. Namaskar.